Good evening to all the respected faculties. Firstly, I welcome and I'm very thankful to our guest of honor today, respected Sapna ma'am, for her remarkable presence today. I'm also thankful to respected Dr. Manish Karamwar sir, all the respected faculties, all the moderators of the GSTS team for providing this platform to speak on the topic, on the historical concept and the evolution. We will mostly focusing on the CAA, NPR, and NRC. Dear friends, this topic will continue in different stages. Firstly, since it is about the citizenship, then we'll know what is the citizenship, how the constitution provides, what are the provisions of the Indian constitution that provides the citizenship to all the citizens of India. Then, following its issues, we'll talking about the immigrations. Then we'll talk about the crisis, how Assam crisis is related to it, and then we'll move how many times this CAA, and we'll conclude that this is not the first time that CAA has happened in our country. It has happened for the several times. So there is no need to hide. So with this, we'll conclude to today's our topic. Starting with the citizenship. Citizenship. One can ask, what is the citizenship? So basically defining a basic meaning of the citizenship, we can say a citizenship is the status of a person in a particular country pursuing the maximum number of rights that the constitution of that country provides to us. With a basic example, if I explain, like our Indian constitution. In our Indian constitution, there are so many articles in the various parts and schedules which are given to us. For example, like Article 14, it's related to right to equality. Like Article 21, it's related to right to life. Like Article 25, it's related to right to religion. All these articles which I am quoting here, these articles, all these rights are provided to each and every person present in India. But if we talk about Article 15, which is the reservation in institutions, reservation in educational institutions, continuing with the Article 16, which is also about the educational institution setup, these rights which are provided, that is only for the citizens of that country. हमारे देश में अगर हमें किसी को कोई अधिकार देना है तो वो सिर्फ जो हमारे मूल निवासी हैं हम उन्हें देते हैं और कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो हम सभी को देते हैं तो दिस इज द बेसिक मीनिंग व्हाट द सिटीजनशिप इज if we talk about the provisions which are provided in our constitutions then so many articles like the provisions in article 5 जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस वक्त जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कई ऐसे प्रोविजंस बनाए कि हम अपने नागरिकों को उनकी नागरिकता आखिर कैसे दें हाउ सिटीजनशिप विल बी प्रोवाइडेड तो अंडर वेरियस आर्टिकल्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली like under article 5 they said the person who have the domicile of India जो यहाँ के निवासी हैं हम उनको नागरिकता देंगे similarly since India was divided into two dominions India and Pakistan. Article 6 says the person who will be migrating from Pakistan, either west or east at that time, we will give citizenship to them who will migrate to India. Under similar provision of Article 8, the Constituent Assembly also give this freedom that the person who have migrated from India to Pakistan, but due to certain reasons, for example, of religious persecution or something else, if again they have came back to India, a date was decided, that is of the 1947, 25th March of 1947, a date was decided that if they wanted to again come back to India, then also we will give citizenship to them. Similarly, NRIs also, Indian NRIs, the constitution also provides the provision to give citizenship to them. But with this, our constitution also made the provision of the Single Citizenship Act that is provided in the Article 9. The constitution, if we talk about, there are many other provisions also, like जब ये देश हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया, लागू हो गया, उसके बाद ये फैक्ट आया कि किस तरीके से नागरिकता अगर देनी है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, how will provide it. Then the government, Nehru government in 1955 brought a Citizenship Act, एक उस टाइम की गवर्नमेंट ने पास किया और उसमें एक्विजिशन टू सिटीजनशिप एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप दोनों चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस एक्ट के थ्रू बहुत ही क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया गया. लाइक एक्विजिशन हमें कैसे नागरिकता मिल सकती है. फर्स्ट पॉइंट, बाय बर्थ, विल गेट द बाय बर्थ.
अगर हम यहाँ भारत की भूमि पे ही पैदा हुए हैं, हमारा जन्म यही हुआ है, तो हमें इस देश की नागरिकता, भारत की नागरिकता हमें मिलेगी। Second process, which was under Article 4 and 5 and including Article 6, that was by process of registration and naturalization. That is, if we are a legal migrant to India, if we have taken visa of Indian government and we have came here, and for a several living for here several of time, if we wanted to take the citizenship of this country, and we have to go with a legal process. So this was introduced in Article 4, 5 and including Article 6, that this is the process you can get your citizenship. With the same, we have Article 7, which talks about that the country will give citizenship to those also by to the territories which are been incorporated. जैसे एग्जांपल की बात करें तो गोवा हमारे देश के आजाद होने के बाद 1962 में हमारे इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी एक प्रोविजन है कि अगर हम किसी टेरिटरीज को अपने इंडियन रीजन में अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो गवर्नमेंट सिंपली एक इनकॉर्पोरेशन एक्ट लाके वहां की जितने भी उस टेरिटरी के जितने भी निवासी हैं उनको नागरिकता दे सकती है। तो ये तो प्रोविजन था कि किस तरीके से हम एक्विजिशन कर सकते हैं, कैसे हमें नागरिकता मिल सकती है। बट विद द सेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स द टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप, कि किस किस सिचुएशन में आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट भी हो सकती है। फर्स्ट इज अंडर आर्टिकल 8, दैट इज बाय रिनंसिएशन। अगर हम अपनी मर्जी से विद आवर सेल्फ डिसीजन अगर हम रिनंशिएट करते हैं कि नहीं हमें यहाँ की नागरिकता नहीं चाहिए, तो हम यहाँ की नागरिकता हमारी गवर्नमेंट कैंसिल कर देगी। सेकेंडली, दैट इज बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इन द सेंस दैट if we take the citizenship of some other country, so at the point of time we take the citizenship of other country, immediately the citizenship of our from Indian government that is completely terminated, because our constitution only provides single citizenship. And the last is Article 10, that is by deprivation. That is in this, under this we have बहुत different तरह की situations होती हैं, like अगर हमारे ऊपर कोई देशद्रोह का अपराध है या ऐसी भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर हमारा कोई एक्ट है या एक्शन है, तो हमारे खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक्ट ले सकती है और थ्रू डेप्राइवेशन ये हमारा पूरी तरीके से हमारी सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो दिस इज द बेसिक थिंग वी लर्न अबाउट सिटीजनशिप, how constitute, what are the provisions and how what the process is. But now we are going to move into the issues. What were the issues that in future government has to make amendment in this Citizenship Act? So firstly moving to immigration around the 1947, immigration issues. जब भारत को दो भागों में डिवाइड किया गया, इंडिया और पाकिस्तान, तो दोनों कंट्रीज के बीच में एक कॉमन एग्रीमेंट था कि जो हमारी माइनॉरिटीज हैं, जो इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहते हैं और जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं, उनको क्लियरली जो है वो जा सकते हैं विद देयर, अपने हिसाब से वो जा सकते हैं। लेकिन इसमें इशू तब आना शुरू हुआ 1950s के टाइम में। विद द टाइम पीरियड ऑफ 1950s इसमें हम देखते हैं बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट को फेस करने थे। इश्यूज में ये हुआ, नंबर ऑफ माइग्रेशंस वर मेड फ्रॉम पाकिस्तान, आइदर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम टू इंडिया। Many Hindus migrated even from Afghan। और इसी एरा में हम देखते हैं, सभी को पता होगा 1959 में दलाई लामा, जो तिब्बतियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना का, विथ हिज 80,000 डिसाइपल्स, वो भी माइग्रेट करके हमारे इंडिया में आए थे। सिचुएशन यहां तक ठीक थी, लेकिन जो सिचुएशन सबसे ज्यादा पैथेटिक हुई वो हुई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। अब हमें ये अगर बांग्लादेश का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है और क्यों हमारे सिटीजनशिप एक्ट में बार बार अमेंडमेंट करना पड़ा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें असम क्राइसिस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम असम क्राइसिस को नहीं समझेंगे तो फिर ये पूरा एक डिटेल्ड हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिटी नहीं होगी। आप सभी के सामने मैप है, इसमें आप देख सकते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ 1950s। उस टाइम पीरियड पे ये जो आज का प्रेजेंट डे का जो मेघालय है, जो मिजोरम है, जो आज का हमारा नागालैंड है, अर्लियर ये पूरा रीजन सिर्फ असम का रीजन होता था, बाद में इसे डिवाइड करके डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया गया। तो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्टली विद द बेसिक पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी 1826 में, सर विद द मैप ओनली, 1826 में एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ओनली फॉर इट्स कॉलोनियल नेचर, उनको अपना सरप्लस जनरेट करना था और बुलियंस गेन करने थे।
ईस्ट इंडिया कंपनी इन द एंग्लो बर्मीज वॉर, इन्होंने इस पूरे रीजन को पूरा अक्वायर कर लिया। और since the region of this Assam region was very rich of natural resources, especially for the plantation of tea and oil, but the need for this plantation and this trading process was the need of laborers. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इन्होंने बंगाल रीजन से, चूंकि आज का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश पहले ही पूरा बंगाल रीजन था, तो इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इन्होंने बंगाल रीजन से नंबर ऑफ लेबर्स की माइग्रेशन वो कराई आसाम में, अपने ट्रेड सरप्लस के लिए, प्रॉफिट के लिए उन्होंने माइग्रेशन कराया। एंड ड्यू टू दिस वी सी द मेन सीड वाज सोन एट दिस टाइम ओनली। एंड द रिकॉर्ड इज दैट इन 1931, बिफोर द इंडिपेंडेंस, the commissioner of that region, the British commissioner only said that the local people, जो वहां के मूल निवासी थे आसाम के, उनका जो कल्चर है एक ऐसी स्थिति पे आ गया है कि वहां के जो मूल निवासी है वही एक माइनॉरिटी पे कागार पे आ गए हैं, वही वहां एक माइनॉरिटी में हो गए, उनका कल्चर खतरे में है। ये ब्रिटिश कमिश्नर ने ही वहां पे एक सेंसस रिपोर्ट में 1931 में बताया। तो यही से बोला जाता है द सीड वाज सोन एट दिस टाइम ओनली। जो वहां के लोकल पीपल थे, जो वहां के मूल निवासी पहले से थे, उन्होंने इन चीजों को पूरी तरीके से गौर करना शुरू किया। प्रॉब्लम कब हुआ, जब इंडिया का टू डोमिनियंस में सेपरेट हुआ इंडिया, तो ये माइग्रेशंस की वजह से ह्यूज माइग्रेशन वाज डन, और नेहरू गवर्नमेंट इस चीज को लेके काफी परेशान थी, और इसीलिए 1950s में नेहरू गवर्नमेंट ब्रॉट एन एक्ट, दैट इज द इमिग्रेंट एक्सपल्शन एक्ट फ्रॉम आसाम 1950, और इसके तहत जो लोग बिफोर आफ्टर 1948 जो लोग असम में माइग्रेट करके आए हैं, उन्हें हमें असम रीजन से एक्सपोर्ट करके उनके मतलब उनको डिपोर्ट करना है, वी विल डिपोर्ट देम बैक टू देयर कंट्री। बट द प्रॉब्लम वाज दैट इन 1950 ओनली नेहरू लियाकत एग्रीमेंट वाज देयर, एंड इन दिस नेहरू लियाकत एग्रीमेंट ये चीज क्लैरिफाई की गई, दोनों गवर्नमेंट ने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई कि हम फिर से एक बार फिर परमिट करते हैं कि जो माइनॉरिटीज माइग्रेट करना चाहते हैं विद इन द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दे कैन माइग्रेट टू आइदर ऑफ द डोमिनियंस। एंड नेहरू जी बहुत ही पारदर्शी स्वभाव के थे, और उनको ये पूरी तरीके से पता था कि फ्यूचर में हमें दिक्कत होगी, और 1951 में नेहरू जी ने सबसे पहले ही NRC, दैट इज द नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस, नेहरू जी ने भारत की जनगणना के साथ ही 1951 में NRC करा लिया। हालांकि ये डाटा गवर्नमेंट ने किसी से शेयर नहीं किया था, लेकिन एक फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक डाटा होना चाहिए, बिकॉज फॉर स्मूथ रेगुलेशन वी नो वी मस्ट हैव द डाटा, एंड NRC वाज डन इन 1951। बट ऑन द अदर साइड वी से 1952 में पाकिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ, मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूं। 1952 में वेस्टर्न पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन लिया दैट नाउ उर्दू विल बी आवर नेशनल लैंग्वेज। चूंकि ईस्ट पाकिस्तान में बंगाल रीजन के लोग थे, उनके सेंटिमेंट्स को ये बात हर्ट कर गई, और उन्होंने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने इसके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट किया। अब जब उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, तो प्रॉब्लम उस वक्त की ये हुई कि जो वहां की पुलिस थी, पाकिस्तान पुलिस और जो फोर्सेस थी, वो पूरी तरीके से इनकी मूवमेंट को क्रश करने की कोशिश करती थी। और जब वहां की फोर्स ने इस मूवमेंट को क्रश करने की कोशिश किया, अगेन प्रॉब्लम ये हुआ कि फिर से लोग बांग्लादेश से माइग्रेट करके आइदर वेस्ट बंगाल या असम के साइड माइग्रेट करने लगे। अगेन माइग्रेशन हैपेंड एंड द सिचुएशन वाज गोइंग पैथेटिक ड्यू टू टाइम। ये सिचुएशन ऐसे ही कंटिन्यू की। 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ, और उसके बाद ही हम देखते हैं 64 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है। आफ्टर नेहरू जी, when Shastri ji became the prime minister, so he was very concerned about this illegal migrants in our country, और इतना जो दबाव था सरकार पे, तो शास्त्री जी ने 3 चीजों पे बहुत ज्यादा गौर किया। उन्होंने कहा कि जैसे नेहरू जी ने NRC कराया था, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फिर से अपने देश में NRC करवाएं, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर डाटा हो और उसके बाद हम कोई एक्शन ले सकें। Secondly, Shastri ji worked for the national ID cards. He said that we'll provide national ID cards to all the citizens of India, so that it will be easy to identify that who are the citizens of India and who are the illegal migrants. और शास्त्री जी ने इस चीज की नींव रखी। जो पहली बार आया वो था पहचान पत्र, that was the national ID card. और thirdly, Nehru ji brought up the Foreigners Act of 1946 of the Foreigners Tribunal,
Nehru ji said that a foreigner tribunal will be set up, and ये जो भी illegal migrants हैं इनको प्रूव करना पड़ेगा कि ये भारत के ही निवासी हैं. This is the most important thing that Shastri ji said. But again, the problem was that in 1965, Indo-Pak war was there. Again, the situation of war came in continuity. And again, जब war हुआ तो फिर से migration दोनों साइड में होना शुरू हो गया, और अब स्थिति जो है पूरी तरीके से हाथ से जाती हुई दिख रही थी, क्योंकि इतना ज्यादा माइग्रेशन हो गया था. आर कंट्री बहुत ही न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, आर्थिक हालत में हमें हर सेक्टर में देखना था, और इसलिए ये माइग्रेशन का दबाव हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा था. नाउ इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. 1970s में अगर हम अदर हैंड पे देखें, 1970s में पाकिस्तान का जो जनरल इलेक्शन होता है वो हुआ, और प्रॉब्लम ये हुआ कि जो वहां की पीपल्स पार्टी थी वेस्ट पाकिस्तान की, उसको कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, और जो शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी ईस्टर्न पाकिस्तान की, उसको क्लियर मेजोरिटी मिली. लेकिन वेस्टर्न पाकिस्तान को ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था. they were not accepting that East Pakistan will govern the whole Pakistan region. उन्होंने बहुत सारी negotiations की शेख मुजीबुर रहमान के साथ, but the problem was that कि वो इस मूवमेंट को जो है क्रश करना चाहते थे. 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर ये हमें गवर्न करने के लिए सरकार बनाने का मौका नहीं देते हैं तो हम ईस्ट पाकिस्तान में ही मेजॉरिटी में हैं, और यही हम अपना एक नया देश सेटअप करेंगे. दिस वाज द पॉइंट ऑफ सीड सोन फॉर द बांग्लादेश. यहां से एक नए देश की मांग बढ़ना शुरू हुई. जब ये मांग उठी 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान मिलिट्री ने ऑपरेशन सर्च नाइट किया, और ऑपरेशन सर्च नाइट के थ्रू हम देखते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान को उन्होंने अरेस्ट कर लिया और इस मूवमेंट को पूरी तरीके से क्रश करने की कोशिश की. As early as Sheikh Mujibur Rahman was arrested on 25th March, the people and his followers on 26th March they declared that from now we are independent, and now our new independent country, that is Bangladesh. दूसरे हैंड पे अगर हम सिचुएशन देखें, और ये इतनी ज्यादा सिचुएशन वॉर की फिर अराइज हो रही थी कि माइग्रेशन, क्योंकि बॉर्डर इतना वास्ट बॉर्डर है बांग्लादेश का इंडिया के साथ, इट इज लिटरली इट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप दैट माइग्रेशन. ये गवर्नमेंट बहुत ही दबाव में थी उस वक्त. अगर हम 1971 की बात करें इस टाइम पीरियड पे, तो हम देखते हैं इंदिरा जी बहुत ही पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई, और 1971 में विंटर टाइम के पीरियड में हम देखते हैं इंडिया सपोर्टेड अपने प्रॉब्लम को, अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया सपोर्टेड बांग्लादेश. एंड फाइनली ऑन 16 दिसंबर 1971 आफ्टर द वॉर पाकिस्तान आर्मी सरेंडर्ड एंड न्यू बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड. As this Bangladesh was formed, our Prime Minister Shrimati Indira Gandhi communicated with the Prime Minister of Bangladesh and explained the situation कि आपके इतने सारे जो citizens हैं वो हमारे यहाँ migrate करके आए हैं और हमारी government बहुत ही दबाव में है. India and Bangladesh had an agreement in 1972, और उस agreement के तहत the point was that the people who have migrated from Bangladesh to India after 25th March 1971, the Bangladesh government was ready to take them back to their country. This was the agreement between India and Bangladesh government. But if you talk about the Assam movement, अब ये background अगर हमने समझ लिया कि क्या क्या situations हुई, कैसे बांग्लादेश फॉर्म हुआ, अब जब हम इसको असम मूवमेंट को देखते हैं तो आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1977 में जनता पार्टी फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में आती है आफ्टर इमरजेंसी, बट ड्यू टू मेजॉरिटी लैक होने की वजह से वो सरकार गिर जाती है. 1978 के टाइम पीरियड पे भी हम देखते हैं जो मेक पॉइंट है, द इमीडिएट कॉज व्हिच मेड दिस असम क्राइसिस एंड असम मूवमेंट स्टार्टेड, दैट वाज द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ मंगलडोई इन असम. असम में एक मंगलडोई लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां में एक बाई इलेक्शन होना था क्योंकि जो वहां के सांसद थे उस वक्त उनकी सडन डेथ हो गई थी. जब ये बाई इलेक्शन होना था तो वहां के जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने जो सेंसस डाटा दिया, उस डाटा ने पूरे सबको पूरी तरीके से मींस एवरीबॉडी वाज शॉक्ड अबाउट दैट डाटा, because the names in the voter list of 1971 and the names in the voter list of 1978, there was a huge difference between both the voter list. और जब इसमें रिसर्च, जब उन्होंने ऑफिशियल्स ने इसमें रिसर्च किया, इसमें पूरी तरीके से इसकी जांच पड़ताल की, तो ये पता चला कि बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स है जो माइग्रेट करके हमारी कंट्री में आए हैं, हम देखते हैं कि बहुत ही
लोकल लीडर्स की हेल्प से, और इलीगली उन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करा लिया। अब जब जो आसाम के मूल निवासी थे, जो वहां के रेसिडेंट्स थे, जो लोकल पीपल थे, उनको दे थॉट दैट नाउ आर कल्चर एंड आर मींस मेजॉरिटी माइनॉर विल बिकम अ माइनॉरिटी, और अब जो है हम पूरी तरीके से ये इट इज अ थ्रेट फॉर अस। They started a movement. The movement was started by ASU, that is the All Assam Student Union, that is with the demand of 3D demand. That is, first what you do, first you detain these illegal migrants, you delete them from the voter list, and thirdly you deport them back to their country. Otherwise, we are not going to help you or cooperate the government in conducting any type of elections. हम इलेक्शन होने नहीं देंगे, इस डिमांड के साथ इन लोगों ने मूवमेंट को स्टार्ट किया। आसाम मूवमेंट फाइनली स्टार्टेड इन 17 and the period was from 1979 to 1985. The main important leaders of this movement, if we talk, then main important leaders was Prafullakant Mahant, then B.K. Phukan, and Biraj Kumar Sarma. These were the three important leaders of ASU and the All Assam Gramik Parishad who were taking this movement forward. Again, what happened in 1981 when Indira Gandhi ji came into with a full complete majority, the government requested this all this ASU that we must conduct the elections in the Assam government, and then we will finalize accordingly. We will accept your demands. The representative from the India government, he said कि चूंकि हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश ने ये एक्सेप्ट किया है कि 25 मार्च 1971 के बाद जो कोई भी बांग्लादेश से माइग्रेट करके इंडिया में आया है, बांग्लादेश इज रेडी टू टेक देम बैक टू देयर कंट्री। बट these people were saying कि नेहरू जी ने जो एनआरसी कराई थी 1958 में, उस डाटा से, उस सेंसस डाटा के हिसाब से आप बाकी सभी इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेन करके डिपोर्ट करो बैक टू देयर कंट्री। एंड दिस वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मूवमेंट लीडर्स। बट सिंस द गवर्नमेंट वाज अंडर प्रेशर of this pathetic situation of the illegal migrants, तो गवर्नमेंट ने आदेश किया कि हम इलेक्शन करवाएंगे। But a tragedy happened in 1983, that is in the Nagam village of Assam. A huge casualties and thousands of people were killed. Casualty हुई जिसमें local peoples और जो illegal migrants थे, उसमें huge casualty हुई and thousands of people were killed. Immediately, Indian government taking action passed the Illegal Migrant Act of 1983. And in this act, the government of India said that we are ready to accept your demand for we will detain the illegal migrants, we will delete them from the voter list, and we will deport them back to their countries. But for this, we need for us some period of time. With the several incidents, 1984, we see that Indira Gandhi ji has a suddenly she died, and Rajiv Gandhi came into the power. But Rajiv Gandhi ji wanted to solve this issue as soon as possible because it was a threat for the country's peace and prosperity. And due to this, we have an Assam Accord in 1985 that is called the Assam Samjhauta. This agreement was between the Assam government, Indian government, and the ASU, which was conducting this movement. In this agreement, we see इसमें तीन समझौते, तीन मुद्दों पे सहमति, आम सहमति बनी। पहली जो डिमांड थी वो मूवमेंट के लोग चाहते थे कि 1951 का जो एनआरसी का डाटा है आप उससे कराएं, और इंदिरा गांधी जी वो का जो रिप्रेजेंटेशन था टिल शी वाज, तो ये था कि 25 मार्च 1971 के बाद जो है उनको इलीगल माइग्रेंट करके उनको डिपोर्ट करेंगे। बट जो आम सहमति बनी वो बनी 1 जनवरी 1966 पे, बिकॉज 1965 में इंडो पाक वार हुआ था, उसके बाद भी ह्यूज माइग्रेशंस वाज देयर इन आवर कंट्री, इस पे आम सहमति बनी। अब जो लोग 1966 में से लेके 25 मार्च 1971 तक थे, उनके लिए जो प्रोसेस बना इस असम अकॉर्ड, इस एग्रीमेंट में, वो दैट वाज दैट कि दे विल बी गिवन द सिटीजनशिप। First, they have to complete their period of 10 years in our country. They will be given all the rights except the voting right. They will get the voting right after 10 years and complete citizenship will be given to them. And the people who have came after 25th March 1971, they will be detained, they will be deleted from the voter list, and then they will be deported back to their country. This was the Assam Act. And for the first time in 1985, we see
due to this Assam Agreement in 1986, the principal Citizenship Act of 1955 that was amended, and first CAA of 1985 was brought. And in first CAA of 1945 was just that this Assam Accord was included in the 6th section of the our Constitution of the Citizenship Act. Secondly, we see CAA was brought in 1986 also. The problem was that यहाँ बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन उठ सकता है कि जो लोग 25 मार्च 1971 के बाद आए हैं, अगर उन दोनों पेरेंट्स का कोई भी बच्चा अगर है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है कि जो कोई भी अगर हमारी भारत की भूमि पे जन्म लेगा तो हम आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स देम द राइट ऑफ सिटीजनशिप. तो इसमें ये चेंज किया गया. इस प्रॉब्लम को चेंज करने के लिए 1986 अगेन द सिटीजनशिप एक्ट वाज अमेंडेड और उसमें एक्सप्लेन किया गया कि एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स, आइदर फादर और मदर, शुड बी एन इंडियन. Then only we will give citizenship to the born child after 25th March 1973. This was the second citizenship amendment which was brought in 1986. Then we have citizenship in 1992 also, but that was not related to this Assam Accord or any citizenship. That was only for the gender equality and the setup for the National Commission for the Women we have to say to initiate the women empowerment in our country. The most important thing that the CAA had and where we get the introduction of this NPR and NRC, that was 2003. Lal Krishna Advani ji, the India government was in power. Lal Krishna Advani ji was our home minister. The Indian government in 2003, firstly in 2000, the Indian government passed an Passport Act. Accordingly, whom and through what process they will allow the migrants to our country who are coming legally, means with having some documents or visa. In 2003, the Indian government presented the new CAA, and a lot of changes in this CAA we see. First changes were in the CAA, what we see, it is that the definition of the illegal migrant was interpreted, and with reference to this interpret, we say that now it was mandatory for the person, like any child who take birth on this Indian land, our constitution provides him the birthright, and citizenship will be given to him. But it was made compulsory that both the parents of that child should be an Indian, or if one parent is in Indian, with the condition that other parent should not be an illegal migrant. This was the condition introduced by the Indian government. Secondly, the reference of NPR and NRC. NRC already happened in 1951 also. Shastri ji also tried for NRC, but it was not happened. But now in 2003, we say that our complete setup of rules and regulations was brought for the NPR and NRC. NPR, that is for the National Population Register. It doesn't have any reference with the citizenship. अब हमारे देश में हर सरकार के पास ये डाटा होना चाहिए कि हमारे देश में कौन रह रहा है. तो ये एनपीआर पूरी पॉपुलेशन का एक रजिस्टर है कि हमारे देश में किस किस भाग में किस किस तरह में कहां से लोग, कौन से लोग, क्यों रह रहे हैं. इवन जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं या एजुकेशन सेक्टर में आ रहे हैं या बिजनेस सेक्टर में आ रहे हैं, किसी तरीके से हमारी कंट्री में अगर वो लीगली आ रहे हैं विद वीजा एंड विद लीगल डॉक्यूमेंट, उनको भी हम अपने इस पॉपुलेशन रजिस्टर में काउंट करते हैं. बट एनआरसी स्टैंड्स फॉर द नेशनल रजिस्टर फॉर द सिटीजन्स. Here we only have the citizens who have the birthright or who have the complete, मतलब जिनका पूरी तरीके से, जिनके पास प्रॉपर डाटा है कि वो हमारे मूल निवासी हैं, उनको हम इसमें शामिल करते हैं. और जब कभी भी भारत की जनगणना होती है तो इसी एनपीआर के साथ ही एनआरसी को गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है विद द प्रोसेस ऑफ हाउस लिस्टिंग, एंड देन उसके बाद ये सेंसस रिपोर्ट प्रिपेयर होती है. Now one can say what was the need for this CAA, which is prevalent, most prevalent today, that is of 2019. So when the BJP government came in 2000, NDA government came in 2014, so they were mostly prepared कि अभी हमें इस जो ये सिचुएशन अराइज हो रही है, we have to make a complete, इसका एक complete solution हमें बना लेना, and we have to means slowly and gradually we have to eradicate this all the political disclosures, and we have to make a permanent solution for it. The government in 2019 brought an complete census data, and according to the census data, the government said they selected 6 religions
with especially to the three countries, that is Afghanistan, Pakistan, and Bangladesh, with the condition of religious persecution. That any of the mentioned religion, if they are persecuted in their country due to religious matter, then they can, and if they have migrated to India, then we will provide citizenship to them, but with the condition of registration process and with proper clarified data that from which date they have are in our country. तो इसके साथ हम देखते हैं कि पूरी तरीके से ये डाटा गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया 2016 में ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, that is the citizenship amendment bill was presented in 2016 also, but it was referred to the JPC committee, and according to the report of JPC committee in 2019, the government again presented this bill and the bill was passed from the Lok Sabha and Rajya Sabha and finally got the assent of the president. But still the rules, since the COVID-19 pandemic was there, तो इसकी जो proper rules and regulations जो guidelines होती हैं उसको जो है अब बहुत सारे मिथ्स लोगों के मन में इसको लेके हैं कि हमारी नागरिकता चली जाएगी, ये सारी, तो हमें इन मिथ्स और इस पॉलिटिकल डिस्क्लोजर को पूरी तरीके से इरेडिकेट करना है। हमें ये समझना है कि ये अमेंडमेंट जो है ये पहली बार हमारी कंट्री में नहीं हो रहा है। with the demand of the situation, with the present time, ये अमेंडमेंट पीरियड बाय पीरियड हमारी कंट्री में टाइम बाय टाइम होता रहा है और इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। इफ वी हैव द लीगल डॉक्यूमेंट्स, इफ वी हैव द प्रॉपर डाटा, कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ बहुत समय से रह रहे हैं, हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं, उनको डर है कि अगर हम डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं कर पाए तो उसके लिए भी वेरियस प्रोविजंस बनाए गए हैं। rather than including in this myths, we have to eradicate all this। और इस डाटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो कई ऐसे नियम हैं, जैसे इसमें हम देखते हैं, तो वो इतना आसानी से जो है हमें ना ही डिटेन करके डिलीट करके या डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। वी विल बी गिवन आवर प्रॉपर चांस and we will be given the chance to prove ourselves that we are the citizens of this country। तो ये बिल पूरी तरीके से इसको ये नहीं किसी की नागरिकता को खत्म करता है। तो इस चीजों को हम समझते हुए हमने देखा कि पूरी तरीके से हमने एक बैकग्राउंड, एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इसका देखा कि क्या रीजंस थे, क्या बैकग्राउंड था जो ये चीजें आज तक हमारी कंट्री में प्रेवलेंट है, और इसका इथिकल सोल्यूशन वी हैव। अगर इसके सोल्यूशन की हम बात करें तो बहुत ही इथिकली और प्रैक्टिकली सेंसस डाटा के हिसाब से जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके हिसाब से हमें जो है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो अभी वी मस्ट सी द टर्म्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हर चीज को, हर तर्क में इसको जो है पूरी तरीके से एक जुडिशियल रिव्यू भी इसका किया और उसके हिसाब से हमें इसको करना चाहिए। वी हैव टू इरेडिकेट ऑल दिस मिथ्स। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे ये CAA, कैसे ये NPR, कैसे ये NRC, ये एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमने देखा और समझा। आई होप आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक इट पॉसिबल। थैंक यू सो मच। इट वाज रियली वेल रिसर्च्ड एंड इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन निगम। बहुत ही विस्तार से आपने सभी चीज़ों को आसान शब्दों में हम सबके सामने रखा और बहुत सारे मिथ्स जो थे वो ऑब्वियसली क्लियर हो चुके होंगे। सो नाउ निगम, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम आवर ऑडियंस जो मैं आपके सामने रखूंगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज what are potential benefits of having comprehensive NPR? See, comprehensive NPR, when we talk about, so, and I already clarified only that NPR and NRC, that is the two different things. That is the completely, NPR is only just to provide a register, okay, to have a complete census data that how many people in our country. It means for a smooth regulation, we can say each and every country of every state, they must have a proper data. So talking about the NPR, it is just a complete census data that we all must, each and every government should have with them for a proper regulation and smooth regulation and for future reference also. Okay, Nigam. There is one more question. How might NRC affect the socio-economic and political landscape in India? See, talking about NRC, so there is a data that when NRC of Assam was done, then only 12 lakh crore rupees was expended. And if if the government is going to do the NRC of the complete nation, then literally it is a fact that a lot of amount that government is going to invest in this. But seeing the present situation, that this migrations and a lot of situation when we see about, especially talk about the Northeast region,
Northeast region, that a lot of things that is going for. Recently we were also aware about the Manipur incidents that happened. So seeing that conditions, the government should take an initiative to come to a permanent solution to all this rather than extending it for a several period of time. We see that Assam Accord, it was started from 1947 when we got independence. We have movement still Assam Accord of 1985, but from then only we are saying a lot of क्यों इतना साल इतने टाइम गुजर गए लेकिन अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है. तो एक इसके परमानेंट सोल्यूशन पे आके आई थिंक सो दैट वी मस्ट इरेडिकेट थिंग and make each and everything smooth and proper regulation rather than extending it for a long period of time. Okay, Nigam, well answered. There is one more question from Muskan Khanna. Should India maintain its current stance of not signing the 1951 Refugee Convention? Recently, Bangladesh clearly stated how it won't take any more Rohingyas. See, talking about the situation in the convention of the that Indian refugee policy, from till our independence till today, India has an ad hoc refugee policy. We neither signed the convention in 1951, neither in 1962. Till now we have an ad hoc policy, but in future, talking about the Rohingyas, when we say that the Burma Act was passed and a lot of Rohingyas, 5 to 6 lakh of Rohingyas, they migrated from Burma to Bangladesh region, and from the Bangladesh region they migrated to our country. So seeing this, firstly I think so that the government has taken an initiative firstly to resolve this the amendment bills and this, and for in future I also all see that the Rohingyas policies and the refugee policy, obviously the government will take some steps regarding that, but till present we have an ad hoc policy and the government is pertaining for the same. Okay, Nigam. There is one more question जो मैं अपनी तरफ से पूछना चाहता हूँ. How is the NPR used by the government for planning and policy making? See, NPR, when we talk about the NPR, so there is a lot of question also that the link between NPR and NRC. But how the government NPR, for example, we take, if you have to organize something, then we must have a proper data of the same. Similarly, the government also in NPR have the complete information of the people, means how many students, in which sector, means their investment are in private sector, public sector. तो इसमें हम देखते हैं कि पूरी तरीके से जब गवर्नमेंट के पास एनपीआर के थ्रू एक प्रॉपर डाटा होता है, तो जब गवर्नमेंट कोई भी अपनी पॉलिसी प्लान करती है और उसको किस वे में एग्जीक्यूट करना है, पॉपुलेशन डेमोग्राफी पे किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कंप्लीट ऑन द ग्राउंड लेवल, तो ये एक डाटा जो होता है दैट इज द प्राइम मोस्ट थिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट पॉलिसीज. ओके निगम, बहुत ही अच्छे से आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर किए एंड आई होप कि हमारी जो ऑडियंस है उनके डाउट्स भी क्लियर हो चुके होंगे. सो नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो पूरी जीएसटीएस की टीम की तरफ से मैं आपको पूछना चाहता हूँ. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद जीएसटीएस? See, I'm really very I'm thankful to Dr. Respected Manish Karamwar sir and all the respected faculties, our today's guest of honor, respected Sapna ma'am, and the whole moderator. I really appreciate this initiative. And I also informed sir just now before starting of the session that I had worked with the department, this Sakshar Society of Shyam Lal College. In my college, when I was in the third year, we organized a national conference, and that in that national conference I really had a cooperative work, and we had a successful national conference, both the societies of Satyawati College and Shyam Lal College history societies. तो मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ पहले से रहा है और बहुत ही अच्छा रहा है, और मैं तो अब हर संडे टू संडे ये मैं प्लान करूंगा सिंस आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. एक घंटे का ये टॉक हमें बहुत कुछ सिखाता है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज हम प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में, जो हमारे देश में चल रहा है, वो हमें जानने का मौका मिलता है. सो रियली आई अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल. थैंक यू सो मच निगम, आपके ये वर्ड्स ऐसे ही हमें इंस्पायर करते रहेंगे ताकि हम और मेहनत करें. और अब आइए जानते हैं कि आज की जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है मिस सपना गुप्ता मैम, उनको आपका टॉक कैसा लगा और उनके क्या इस पे थॉट्स हैं. सो मैम, आई इनवाइट यू कि आप आए और अपने जो रिमार्क्स है टॉक के ऊपर वो दें. Thank you, Manthan. Nigam, your presentation was very good. And the way you have started your 171st talk
because like you're presenting in 171 talk, your presentation has started with the understanding of rights of citizens of India and what are the rights which is given to all the people who are residing in India. You differentiated that these Article 15 and 16, these are those rights which is not, given to the non-citizens, I would say aliens, because in political science we use the term alien who are not a citizen of our land. So, first of all, the journey, the historical, as your topic suggests, the historical context and evolution of citizenship legislation in India, focus on CA and NPR and NRC. You have justified this topic, but three things which I do want that you should discuss, or somewhere this could enhance your presentation or your learning about this topic. That Northeast India, there is inner line permit system. This is something where, the citizenship, I don't know, have you ever heard about it, inner line permit system? इसमें ये है that the people who are living in the tribal area, sixth schedule है, there is a sixth schedule in India, that वहाँ पे जो भी लोग migrate करते हैं, उस जगह पे citizenship जो है, उन जगहों पे migrated लोगों को नहीं दी जाएगी. तो ये CA, NPR और NRC से किस तरह से related है, that thing will definitely, give a insightful learning from your out of your presentation if you include it. Sixth schedule का थोड़ा mention आपको करना चाहिए, with this ILP act. Along with that, असम जो CA NPR NRC 2019 में हुआ है, वो असम अकॉर्ड को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, because whole when this system has started, when this legislation has started working on, a lot of protest has happened, and why it has happened because of this Assam Accord thing. So ये एक थोड़ा सा चीज, of course, somewhere politicization has not been discussed. You have completely avoided it. That is completely appreciable. But somewhere you should somewhere थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ना पड़ेगा कि असम अकॉर्ड किस तरह से इससे अफेक्टेड हो रहा है. एंड देयर इज वन मोर थिंग, माइग्रेशन की वजह से सिटीजनशिप टाइम टू टाइम हुआ है, ठीक है ना. सिटीजन बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं सिटीजनशिप एक्ट्स में. माइग्रेशन के साथ एक इकोनॉमिक इश्यूज आ जाते हैं. आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैज बीन हाईली अफेक्टेड बाय दिस माइग्रेशन थिंग, एंड दैट इज व्हाई टाइम टू टाइम वी Indian government has needed the Citizenship Amendment Acts. Migration की वजह से there is a complete demographic change in the entire northeastern region. त्रिपुरा को अगर आप पढ़ोगे तो त्रिपुरा में I think more than 73% और somewhere like 73, अगर हम अप्रोक्स पे जाएंगे, 70% पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेशनली माइग्रेटेड है, उस जगह पे आकर के रह रही है. उसका वो किस तरह से अफेक्ट करती है और वो किस तरह से सिटीजनशिप, सी नो गवर्नमेंट, लाइक कोई भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एक नया अमेंडमेंट करके नए प्रोसीडिंग्स के थ्रू NPR वगैरह लेकर के आ रही है, तो क्यों लेके आ रही है? अगर आप, आई नो ये सारी चीजें फैक्चुअल चीजों में नहीं आते, बट समवेयर द फैक्चुअल I think I think Sapna, we lost you. You are here, Sapna? Okay, over to you, Manthan. okay sir, no problem. So moving forward, let me invite our next speaker on the next Sunday, Miss Salma. She will be speaking on the topic, the enduring psychological impacts of childhood experiences and parenting on adult life. So Miss Salma, please come forward and introduce your topic. Good evening, everyone. First of all, I'd like to congratulate Nigam on delivering such a wonderful talk. It was very informative. I am Salma Thampi, and I think Sapna ma'am's back. Should I just... Yes, Salma, wait for a while. Yes, Sapna, you disconnected yourself, or maybe because of internet issues. Yeah. Okay, so only these things, inner line permit system, sixth schedule, and the Assam Accord, along with the economic dimension of understanding the Citizenship Amendment Act. That if you include these 3 points, I think your presentation on the learning on this topic will become the complete one. Only these 3 things were missing from my side. Baki aapka presentation was like very good. I learned a lot. Thank you. Thank you so much, sir.
थैंक यू मैम। मैम और एक रिक्वेस्ट थी कि इस GSTS की इनिशिएटिव के बारे में अगर आप कुछ विचार साझा कर सके तो, कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जिस तरीके से ये वर्क करता है इसको लेके अगर। ओके मंथन, मैंने सर के साथ ही 1.5 साल पहले ही यहाँ पे GSTS के बारे में जाना है, एंड जब जाना, बिकॉज दिस GSTS talk is like covering a range of topics, from social science discipline to the science discipline. So I have learned a lot as a student, and of course now being a guest of honor, I have learned a lot. एक टैगलाइन है जो हर कोई बनेगा स्पीकर, आई थिंक this initiative of because जब एक ट्रेडिशनल क्लासरूम होता है, people hesitate to speak, people hesitate to present themselves out. But when we are having some non-traditional, non-conventional platform of learning, hesitation breaks, that thing breaks the hesitation. And I think GSTS का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है. लर्निंग किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए इन द नेगेटिव सेंस. सो सर का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है. एंड 171th टॉक, एंड बिना किसी ब्रेक के, इट्स अ बिग थिंग टू डू. बहुत एक लंबे टाइम तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज नॉट एन इजी टास्क, एंड व्हिच यू एंड मनीष करंगवा सर हैज डन. सो आई अप्रिशिएट दिस. Of course I have learned a lot. Thank you so much, sir. Thank you, Manthan and Nigam. Over to you, थैंक यू सो Manthan. मच मैम. थैंक यू सो मच मैम हमें आज के लिए ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए. एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सलमा आप अपना जो टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. Okay, continuing. So, good evening once again. I am Salma Thampi, and I'm currently doing my master's in clinical psychology from Uttaranchal University. And I am someone who's deeply interested in child psychology, which brings me to the topic that I'd be speaking about next week, which is the enduring psychological impact of parenting and childhood experiences in the adult life. Now, what would be my objectives for the talk? Number one, I'd be observing childhood experiences through a multi-dimensional lens, including several perspectives like the socio-economic, evolutionary, attachment theory, trauma, and a lot more. Secondly, my primary focus would be to make the talk as easy to understand, as relatable as possible, because this is also my attempt to spread awareness and psychoeducate. Thirdly, I'll be creating a space for everyone attending to look at their childhood experiences and maybe understand why they do the things that they do in their adult life. So all in all, it's going to be a session filled with a lot of emotions, a lot of self-exploration. So I'm really excited about it. I'm really excited to share this learning space with all of you. So I look forward to seeing you all next Sunday. Thank you. थैंक यू सलमा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं, आप सभी मतलब नेक्स्ट संडे GSTS के इस प्लेटफॉर्म पे रविवार को शाम 5 बजे जरूर जुड़िए. और इसी के साथ मैं अब जो अगला सेशन मतलब आगे इस सेशन को मनीष सर को हैंड ओवर करता हूं कि वो आए और हमारे जो लास्ट मंथ का स्पीकर ऑफ द मंथ है उसका नाम और वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें. सो सर. Thank you, Manthan. It's a great, again, a wonderful evening, despite the India-Pakistan match and despite the Prime Minister is going to sawn in, and we're having enough good audience to listen your Nigam. So it depicts that this forum and Nigam's idea is very perfect. So today's Sunday, as usual, and I have 3 work. Firstly, I have to announce the speaker of the month. Usually, our moderator will announce all these things, but because these people are a little bit engaged MA examination and UPSC NET examination, so there's a lot many things we are going through. So the speaker of the month, that in month of May, we have a splendid presentation. There are so many splendid presentations, I think lot many, 4 or 5. But Miss Kalpana Dhyani, and she talked about the stress and coping mechanism. Just Salma also told right now, she's also going to talk about the child psychology and the other things. So child psychology and stress, these are the 2 different things, but connected ideas. Psychoanalysis or likewise things. So if Kalpana is here,
I would like to invite Kalpana, because this is a I'm not going to provide you any mementos or certificate. We'll provide through a post. But if you are around, so open your camera, or maybe um, say a few words about all these things. Kalpana, over to you. Good evening, sir. Thank you for inviting me, and thank you for this Speaker of the Month title. And it means a lot to me. First of all, thank you to the GSTS portal for giving me this chance to present myself. And I'm really interested in the topic we'll discuss in the next week. One of my friend from another college, Uttaranchal University, she's going to talk about another psychological topic, that is parenting related topic. I'm very interested in hearing what she has to say about it. So I'm really interested to listen to her. And thank you so much again for this opportunity and letting me put out my thoughts in front of you all. Thank you so much. Thank you, Kalpana. But your absence in the last two GSTS is not taken very good, huh? So just I'm joking. It's up to you. Academics is what? Academics is what? That is up to you. I'm not going to force anyone to join except few students of mine. So thank you, but try to join and try to spread this message. And this field we are failed. That means, and I very much happily agreed this. So kindly, my speakers and at least my guest of honor, they try to join. Otherwise, 171 talk, 171 speakers and 160 students and 170 guest of honors. Because I never ever repeated anyone as a guest of honor. So 300, and I never see the 300 students or the teacher. So try to join. I know there are not many busy. 5 to 6 Sundays, very difficult time. So congrats. I know, no excuses. It's fine. Kalpana, thank you for joining. Kindly spread this message. Okay. So now this is very interesting topic. That the CAA, NRC, migration, there's lot many things, and two young scholars, young, that means one Nigam, and Nigam has provided a very interesting portrait about the historical journey of CAA, NRC. And when Nigam came with this topic, I was little bit surprised, but how you handle this topic, it's really perfect, Nigam. Because today when Prime Minister is going to sworn in and we are talking about the CA and NRC, this is a coincidence, but sometimes it's happened. Okay, so Nigam, very wonderful presentation, and these two things are not related. Don't correlate these two things, because GSTS is a very neutral type of forum where we the whole thing is what the speaker. The speaker has decided their topic and they will speak their mind. Little bit we cut down or we add something, but we are not like cut down the whole idea of anything. So Nigam, wonderful that you have presented a very interesting way, because it's most important that we have to know about the history of all these things. And if you people like like in the judiciary or administration, definitely one day India will rise more, definitely, because you portray very, and if you join any administrative forces and anything, so you portray your ideas very amicably, and we need such kind of administrators, such kind of police persons, and such kind of educated also. Thank you, Nigam, for giving you a very wonderful and balanced view and a very appropriate view. So मैं बार बार बोलता हूँ कि कई controversial topic पे भी काफी अच्छी बात हो सकती है. So thank you, Nigam, for giving your time, and all the best for your coming Sunday UPSC pre, and
few of my moderators also, they are joining. And again, Sapna, because what I'm trying to do, because Delhi University having so many young teachers, because everybody knows that we have recruited few old teachers and so many young teachers. What I translated, why not young teachers, young faculty members also came on this platform and shared their views. So amongst them, Sapna is one of the youngest faculty member in Delhi University. That's why, Sapna, wonderfully, you have given 3 good ideas, and the 4th one is also very appropriate. So thank you, Sapna, for joining us and giving your valuable time to 5 to 6. So thank you again, Ms. Sapna, to join us. Okay. Thank you, sir. And as usual, moderator Manthan. So every time you came with a new idea. So about the topic, give me 2 more minutes, because topic is, I'm not going to talk about the CAA and NRC because a very talked topic around. But the thing is, these kind of topic are very crucial, because and this is not, I'm not taking ideas from Nigam's, your idea is perfectly fine. But one thing is very, every time very hurt me, that when North people go to the South, the cultural hamper. When the non-Bengali go to the Bengali issue, the cultural hamper. The Assamese go to the Bihar, they spread the. So if India is a cultural, a very cultural country, so why this happened? Because I'm just because this forum where also speak me also speak very brutally and sometimes very openly. Okay, क्योंकि मैं इसको काट सकता हूँ अपने YouTube channel पे नहीं जाने दे सकता हूँ. So because this is on my hand, okay. So my idea is what? So as a young scholar, as a young teacher, kindly delete this mindset that if one people, if suppose that Delhi people go to the Uttarakhand, they are going to spread the dirtiness or spread the canes and the chips packet here and there. No, Kalpana and Sarma. This is the attitude of the human being. It's not Delhi, it's not Calcutta, it's not Punjab. This is the attitude of the human being. Because you go to the metro, people are not spitting here and there. So what? This is an attitude of a human being. This is not related to the state, people, class and the caste. So as a student, kindly inculcate these kind of the habit, this kind of habit. And the word detention, deport, because I'm a history teacher, and in Africa, usually I go around so many migrations, diaspora, because I've worked very from last 20 years work on the diaspora and migration, etc. So how many Hindus are living in Afghanistan and how many Hindus living in the Pakistan? Do you know, in Afghanistan, only 50 and 60 Hindus are there. And this is the very interesting data, I think so. And more than Hindus living in the Iran, 39,200. Got a point? So my limited idea is, if we accept simply, because Nigam is going to give their own idea. So as a convener of this forum, if we accept 30 or 40,000 people from other part, I don't think so. This is churning a big problem. So yes, you are right. It's a political solution, but cultural and historical solution. If we accept simply, if we accept people, those who are living in India from last so many years, we accept, that's okay. If the population is 50,000 increase, I don't have any problem, because we believe in Vasundhaiva Kutumbakam. So what I'm trying to say, what we have written, what we have pronounced to the world, kindly acknowledge this thing and kindly accurately do the thing. So my idea is what? That the huge word refugee, detention, etc., etc., these are the contract given by the, when the Britishers came to India. Nigam also told about the, when the Britishers came to in the fore, the problem has give a leap, rise, the problem has rise. Okay, so my limited question is first, my first idea that we eliminate the north, south and cultural division, and the secondly,
the war, these kind of detention, refugee. We use the different words for all these things because these are the very intriguing words when we talk about the human being. So we solve these issues, not only the political ideas, not only the act, but the historical background and the cultural aspect also. This is my limited aspect. And we stop war, conflict, then we stop migration. So thank you very much. Because today I don't have any class, so I took 6 minutes more. And so thank you very much, all my colleagues from different colleges. Sasibhushan Singh is also here. He was your teacher in your college, but I think he has left. Madhvi ma'am, Ritu ma'am, and from the Shyam Lal Evening College, so many teachers are joined. Thank you very much, my graduate, postgraduate, MA and MPhil PhD students.